Assalamu alaikum, this is Chaudhry Mohammad Osama, and today we're going to discuss the second part of dimensioning, that is dimensioning the object features. So far we have studied how to dimension the object using the extension line, the leader line, and the dimension numbers and the dimension lines, and what are the problems that a person can do, or the mistakes a person can do while applying the dimensions using these things, and what is the difference between the unit direction and the aligned matter. To now, today we will discuss about the dimensioning of object features like its length or its radius, or how to dimension the fillets and the curves, etc. So first of all, we will start with the dimensioning of the length. Like for example, if you have to dimension the length of an object, so the information you have to dimension is basically the length of an edge and the distance between the features. So components आप कौन कौन से use करेंगे? The first component that will be used is extension and the dimension lines, and the third one is dimension number. So for example, this is an object that we have to dimension. तो इसमें आपने तीन चीज़ें यूज़ की. You have to use the extension line, the dimension line, and the dimension number. और आपने जो इसमें information dimension की है, that is basically the length of an edge and the distance between the features. आपने ये लेंथ मेजर की है या ये लेंथ इंफॉर्मेशन डायमेंशन की है यूजिंग द एक्सटेंशन लाइन एंड द डायमेंशन एंड द नंबर. फिर आपने ये लेंथ मेजर डायमेंशन की है, एंड देन यू यूज्ड दिस लेंथ and then this length and then this length, and then finally the distance between the two centers of the circle using the extension lines and the dimension lines and the डायमेंशन नंबर. अब इसमें आप नोटिस करें कि यहाँ पे भी 1 मिलीमीटर का गैप है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर का गैप है. द नो एक्सटेंशन लाइन इज एंडिंग विद इन एरो, थोड़ी सी उसके बियॉन्ड जा रही है 2 to 3 मिलीमीटर, एंड ऑल द वर्टिकल डायमेंशंस आर प्लेस्ड इन अ वे सो दे कैन बी रेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड. दिस इज बेसिकली एन अलाइंड मेथड. सो जहाँ पे आपका एरोज इनसाइड प्लेस नहीं हो सकते थे, वहाँ पे एरोज आउटसाइड प्लेस हुए हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें टू ensure there is no mistake in the dimensioning. Then for example, if you have to dimension the angle, so basically the information that is to be dimensioned is the angle between the edges. For example, if you have to dimension an object which includes an angle, and you have to put the dimensioning on that angle, so the components that you will use is the extension and a circular dimension line and the dimension number. So इसमें change सिर्फ इस part में ये कि now you will use a circular dimension line. So far we have been using the dimension line that is linear. Now we have to use a circular dimension line. So that is the only difference in the dimensioning of an angle or length. The circular dimension line must have its center at the vertex of an angle. For example, these are the examples of a circular dimension line. For example, you have an object like this, तो आपका जो vertex है वो यहाँ पे lie कर रहा है. तो ये जो circular dimension line है वो आप यहाँ पे compass रख के इसको draw करोगे. तो this you have to make sure कि आपका यहाँ पे कंपास आएगा, then you have to draw these two lines. एंड आपने यहाँ पे कंपास रखे हैं और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, तो आपका जो वर्टेक्स होगा और जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट शुड बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. दिस इज अ पुअर प्रैक्टिस इन अ वे, बिकॉज आपका जो वर्टेक्स है दैट शुड बी हेयर, लेकिन इस पॉइंट में आपका जो वर्टेक्स है इट्स लाइंग समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ द कर्व वी आर सीइंग ऑफ अ सर्कुलर डायमेंशन लाइन. अगर आपका वर्टेक्स यहाँ पे होता तो आपकी जो डायमेंशन लाइन थी इट शुड बी लाइक दिस, which would have been right. Now we move to the arc. For example, you have an arc and you have to dimension the arc. So the information that you have to dimension is basically the radius and the location of its center, and the dimensioning components is basically that you need to use are the leader line and the local node, the extension and the dimension lines, and the dimension number. So दो चीज़ें आपने mention करनी होती हैं या dimension करनी होती हैं when you are dimensioning the arc. The first one is radius, and the second one is the location of its center. The letter R is written in front of a number to emphasize that the number represents a radius of an arc. So आप letter R लिखते हो to emphasize कि जो information given है that is basically denoting the radius of a arc. The leader line must be aligned with the radial line and has an inclined angle between 30 to 60 degrees of the horizontal. The node there and the arrowhead should be placed on a concave side of an arc whenever there is a sufficient space. For example, these are the two examples. अब आपके पास ये arc है, इस arc का center यहाँ पे lie कर रहा है, and then you are drawing a you are basically denoting the radius of this arc. तो आपने क्या करना है कि whenever there is a space, तो आपने उसका जो concave side है, concave side for example ये अगर आपका है तो this is the concave side and this is the convex side. तो जो concave side है वहाँ पे आप अपने इसका
रेडियस पुट करना है या आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है इफ देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस. सो सफिशिएंट स्पेस फॉर एरो हेड ओनली. अब यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस सिर्फ एरो हेड की, यू कैन नॉट पुट रेडियस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लीडर और नोट प्लेस कर दोगे. और अगर यहाँ पे भी कनकेव साइड पे पुट किया भाई, यहाँ पे भी कनकेव साइड पे पुट किया. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर dimensioning an arc that you should be writing the information on the concave side, and if there is an enough space कि आप वो चीज़ जो है वो सिर्फ एक लीडर के ऊपर लिख सकते हो. सो देर इज़ नो नीड टू प्लेस अ स्पेसिफिक शोल्डर ऑन इट फॉर द नोट. बट इफ़ देर इज़ नॉट इनफ स्पेस तो आपने लीडर को इस तरह शोल्डर दे के उसके ऊपर नोट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखनी है. Then if there is an insufficient space, so you can even use the leader on the convex side of the arc as well. There are the common mistakes of the leader and the when you're dimensioning the arc. Basically इसमें क्या किया गया कि जो shoulder है वो left hand side पे चला गया. This is not designated from the center. This is vertical. This is also wrong. In this case, it's the distance was enough to write the dimension here, and it should be more than 10 millimeter. This is horizontal. This is also wrong because it should be coming from the center of the circle, and it should be horizontal. And this is using the extension lines and dimension lines in order to represent the radius of arc, which is also wrong. If an arc has its center lies outside the sheet or interfere with other views, use the force shortened radial dimension line. If the center of an arc is basically outside of the dimension line, so you can also use this method to ensure that your dimensions are inside of the chart paper. This is the first method, and this is the second method, that आप उसकी center line के aligned ही later line place करें. But whenever you think that it's crossing the drawing sheet, you can just simply put the shoulder there and put the note in front on top of it. Then you have a curve. Basically curve is a combination of arcs. Like for example ये एक arc है and this is also an arc. तो अगर आप इनको combine कर दोगे तो you will find a curve. So basically curve जो होती है और यहाँ पे इनके center points आ जाएंगे तो curve जो होगी, this is the combination of arcs. So this is also important that you need to understand what a curve is in order to give its dimensions. So the first thing is that the information that you need to dimension about the curve is the radius and the location of center, pretty similar to what we already studied in arcs. इसमें आपके use करेंगे, you will use a leader line, a local node, an extension, a dimension lines, and the dimension number. For example, this is an arc. This is very simple. You have to just consider it as the combination of this is a curve which is a combination of arcs. उसी तरह कनकेव साइड पे आपने लीडर को प्लेस किया, इसकी भी कनकेव साइड पे लीडर को प्लेस किया है, और आपने दो इसके नोट्स लिख दिए एंड देन इट्स गुड टू गो. देयर इज अ कॉमन मिस्टेक इसमें ये है कि नाउ इट्स बेसिकली ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये इसके सेंटर पॉइंट में, ये इस कर्व, इस आर्क और इस आर्क का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर उसने ये नोट है. सो इट्स नॉट शोइंग कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर R20 लिखा हुआ है तो वो इस आर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इस आर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो you have to make sure whenever there is a curve in your drawing, so you have to dimension both the arcs separately. Then if you have fillets and rounds, the only thing that you need to dimension is the radius, and the dimensioning components that are used are the leader line, the local node, the journal node, or basically the combination of both. For example, if this is the part where you have a lot of fillets, so all the fillets and the rounds have equal radii, so you don't have to dimension each one of them separately. You can just write a note that all fillets and round are this radius. तो इस तरह आपको सारी dimensions देने से बच जाते हो. But if there is a one fillet or a round that have a different radius, that you can simply write that all fillets and round are the radius 6.5 unless otherwise specified. तो जो एक radius होगा जो that is different, you can simply specify that, but it will still save you the trouble of giving the dimensions to each and every fillet and rounds. Then you have a cylinder. For example, if you have a cylinder and you need to dimension it, the information that you need to dimension are the diameter and the length, and the dimensioning components that you will use is the extension and the dimension lines and the dimension number. Diameter should be given in a longitudinal way with the symbol of a phi, which is the symbol that is used to represent the diameter and placed in front of a number. So this is basically like the front view of a circular object. So it's a front view or maybe the left hand side view. So left hand or the right hand side view. So basically what is given here, that the diameter of the cylinder in this form is given as a extension and a dimension line, because it is considered as a
linear distance, but you will still have to put the diameter symbol in front of it that will represent it that this dimension is basically a circular dimension. Like for example, when you measure the diameter of a circular object in a vernier caliper, basically what you're doing is measuring the circular uh, diameter with a linear distance. This is also the same thing, that you're representing the circular distance with the linear dimensions. However, it is still a diameter, so you have to put the phi symbol in front of it. Now this is external chamfer. For the external chamfer, the information that needs to be dimensioned are the linear distance and the angle, and the dimensioning components that will be used are the leader lines, the local node, or the extension and the dimension lines and the dimension numbers. For example, you have a chamfer, so basically you have to dimension it. So what you will do is dimension the basically distance and the angle of the chamfer. These are the two things that you will use. What you're using is that extension lines and the dimension lines, and here you're using the circular dimension lines with the vertex of a angle. But for example, if you're you can also write this s and theta in the form of a leader line and just multiply them. This will also give the information about the distance and the angle. But in the case of 45 degrees, you can also present the distance of an external chamfer in this way. In the case of 45 degrees, you can also present this external chamfer in the case that you can also measure it with the for s multiplied by s, and this is basically the dimensioning of a chamfer of a circular object, and this is the dimensioning of a chamfer for a rectangular object. Hole. For example, there is a hole in your drawing and you have to dimension in the hole. So basically what you have to do is dimension the diameter and the depth of the hole, the location of its center and the number of holes having the identical specification. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि whenever there is a लीडर लाइन, तो उसके ऊपर जो नोट होता है दैट इज बेसिकली गिवन लाइक डायमीटर 25 मल्टीप्लाई बाय 4. सो उसमें क्या शो हो रहा होता है, उसमें ये शो हो रहा होता है द नंबर ऑफ 4 होल्स आर हैविंग द सेम आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन. तो आप वो नोट में मेंशन कर देते हो. और साथ साथ आप डायमीटर भी आपको बताना होता है, डेप्थ भी बतानी होती है, एंड द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर. व्हेनेवर देयर इज अ होल, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर in order to draw it or locate it. So the diameter and the depth of the hole should be given in a circular view. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब एक होल है, उसके आप जब 3 व्यूज ड्रॉ करोगे तो एक व्यू में शायद वो रेक्टेंगुलर शेप में शो हो रहा हो, एक व्यू में वो सर्कुलर शेप में शो हो रहा हो, एक व्यू में मे बी दैट होल इज हिडन. सो व्हेनेवर you have to dimension the depth and the diameter of a hole, you have to make sure that you have to dimension it in the circular view. The location of the hole should be given in a circular view as well. So basically this is a small hole, this is a through hole, and आपने कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस किया which we have already discussed. तो अब आपके पास ये जो ऑरेंज सा एरिया दैट इज बेसिकली विल बी शोन विद द सेक्शन लाइंस बिकॉज द कटिंग प्लेन इज कटिंग दिस फ्रॉम द सेंटर. तो अब आपके पास ये दो इसके वो हैं, क्या नाम है, व्यूज हैं. एक आपके पास टॉप व्यू आ गया और एक आपके पास फ्रंट व्यू आ गया विद बेसिकली अ सेक्शन व्यू. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपने जो इसका डायमीटर है दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग इनटू द सर्कुलर व्यू. और 10 drill basically you're showing that the feature of the hole is basically 10 millimeter drill. For example, if you have a blind hole, now it's important that if, for example, if you have a through hole, then it's not important to mention the depth of the hole. It's understood that the hole is through hole, but whenever there is a blind hole, you have to mention कि उसकी कितनी depth है, because आपको depth पता चलेगी इस distance की वजह से. This distance is important because it's not a through hole. So अगर आपकी depth given है, then it's understood कि जो hole है that is not a through hole, it's a blind hole. तो वो आपके पास डायमीटर के साथ जो लोकल नोट है उसमें ये भी बता दिया कि इसकी कितनी डेप्थ है. अब इसमें डिस्टेंस ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो लोकल नोट थे इट्स ओनली गिवन द डायमीटर दैट वाज 10, लेकिन इसमें 10 के साथ आपका 12 डीप भी लिखा हुआ है विच शोज के जो 12 डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली द डेप्थ ऑफ अ सर्कल. दैट शोज कि ये जो होल हुआ है दैट इज नॉट अ थ्रू होल, दैट इज अ ब्लाइंड होल, और उसकी जो डेप्थ है दैट इज 12. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका डायमीटर, उसकी जो डेप्थ है दैट आर ऑल्सो गिवन इन द सर्कुलर व्यू. For example, if you have a small hole and you have to drill a hole, so you have to specify its location. तो सेंटर टू सेंटर लोकेशन आपने ये स्पेसिफाई करनी होती है. लाइक आपने ड्रिल किया, अब आपका ये होल जनरेट हो गया, आपने उसकी हिडन लाइंस ड्रॉ की, सेंटर लाइन ड्रॉ की, अब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और आपने एक और होल जनरेट किया, इसकी भी हिडन लाइंस आ गई, इसकी भी सेंटर लाइन आ गई. अब जो बेसिकली आपने डिस्टेंस बताना होता है दैट इज फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर ऑफ द होल. अब इसमें आप अगर नोटिस करें तो जितने भी जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज फ्रॉम वन सेंटर लाइन टू द
next center line. So this is important that whenever you have to give the distance from center to center, you can also use the center line for that. It's clear like that way. ये जो आपके पास ऊपर डायग्राम है, इट्स अ टॉप व्यू, और ये जो नीचे डायग्राम है इट्स अ फ्रंट व्यू. सो ये जो डिस्टेंस अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो बेसिकली आपका डिस्टेंस यहाँ से आ रहा होगा. दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपका डिस्टेंस गिवन है 40. सो अगर आपने ये ज़रूरी नहीं है जो 40 डिस्टेंस है ये आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट में शो करें. यू कैन ऑल्सो शो इट इन द फ्रंट व्यू एज वेल. Possible methods for the large hole. Now we have moved from the small hole to large hole. So the possible methods to dimension the large hole are also these, that are you can use the extension and the dimension lines. You can use the diametral dimension line. Now the diametral dimension line is basically a dimension line that is inside the circle and it's basically showing the diameter. And then you can also use the leader line at the node for dimensioning of the large hole. These are the common mistakes that one can do during the dimensioning of an hole. These are very simple. If you have already understood the previous rules, you can simply figure out what are these common mistakes. Now you have a straight slot. That information to be dimensioned from the straight slot is the length, width, and the location, and the dimensioning components that we can use are the extension and the dimension lines and the dimension numbers. So for example, for the straight slot, this is the machining component process. आपने एक hole drill किया है and उस holes को आपने extend किया है, so you will create a slot. अब इसमें जो आपका distance होगा, that will be from the center of the first hole to the center of the second hole. This will be the distance from the center to center. और आपको जो दूसरा distance देना है, that will be कि आपकी जो दो holes हैं उनका diameter क्या है. So this is basically 15 is the diameter of these two holes and the 40 is the center to center distance from these two holes. और अगर आपने स्लॉट कंप्लीट नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट स्लॉट. अगर आपका स्लॉट हाफ है, लाइक उसमें सिर्फ एक होल एग्जिस्ट कर रहा है, सो यू हैव टू बेसिकली गिव द डिस्टेंस ऑफ अ टूल डिस्टेंस, कि आपके टूल ने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है. अब दिस इज अ हाफ स्लॉट, यू हैव ओनली वन सर्कल, तो आपने जो डिस्टेंस देना होगा वो टूल कटिंग डिस्टेंस देना होगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है. तो बेसिकली अब ये जो 50 डिस्टेंस है वो ये गिवन है कि यहाँ से टूल स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे टूल एंड हुआ था, एंड दिस 15 इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. Now you have a key set basically dimensioned according to the standard size of a key to or to facilitate the manufacturing process. वो बता रहे key sets होते हैं. बेसिकली key sets ये होते हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ पे कीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और ये शाफ्ट और जो आपके और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपने बेसिकली अटैच करना होता है वहाँ पे आप ये कीज लगाते हो. सो बेसिकली इसी तरह आपने जब बेरिंग और व्हील्स वगैरह को ज्वाइन करना था, यू कैन ऑल्सो यूज़ कीज फॉर दैट. तो कीज़ में ये होता है कि आप उसकी जो डायमेंशनिंग है वो इस तरह परफॉर्म करते हैं. बेसिकली ये भी स्लॉट्स ही हैं. अगर आपने पूरे स्लॉट की डायमेंशनिंग देनी है या आपने इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कवर करना है, पूरे स्लॉट की डायमेंशनिंग जो है दैट इज प्रेफर्ड मोर देन इफ यू गिव द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. Now the placement of dimensions. Extension lines and leader line should not cross the dimension line. This is important in a way that इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो leader line है it's crossing the dimension line, और यहाँ पे आपकी जो dimension line है it's crossing the extension line. So this is the poor practice. So you have to make sure कि आपकी जो extension lines और leader lines है they should not cross the dimension line at any cost, and place longer dimensions outside the shorter ones. अब ये issue तब solve हो सकता है if you place the longer dimension आउटसाइड द शॉर्टर ones. आपकी जो पहली डायमेंशंस आ रही हैं वो दैट शुड बी शॉर्टर, एंड जो आपकी बाद वाली डायमेंशंस आ रही हैं दैट शुड बी longer. So this in this way your leader line or your extension line will not cut the dimension line. Then the recommending practice too is that extension lines should be drawn from the nearest points to be dimensioned. अब इसमें ये मसला है कि जब आपकी ये जो extension lines draw हुई हैं, these are basically draw in front of the inside of the view. So this is wrong because it can be drawn like this and it can avoid the thing that it can avoid the practice that you have to draw the extension lines in front of a inside of a view. So it's more important that you need to draw these extension line outside the view. Then you have the recommended practice that extension lines of an internal feature can cross a visible line without leaving a gap at an intersection point. अब ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जो एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ कर रहे हो दीज आर द कॉन्टीन्यूस लाइन, सो यू नीड टू नो कि इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं होना. इस तरह जो आप डिटेल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो उसने भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होना. इट शुड बी लाइक दिस एंड इट शुड क्रॉस द विजिबल लाइंस. Do not use the visible center and the dimension lines as an extension lines. आप visible या center line या dimension lines को extension lines use नहीं कर सकते. For example यहाँ पे क्या किया हुआ है उसने इस कोई extension line draw करने की ज़रूरत नहीं समझी,
उसने इसी विजिबल लाइंस को एज एन एक्सटेंशन लाइन यूज करके डायमेंशन देने की कोशिश की, विच इज रॉन्ग। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने कोई डायमेंशन नहीं, एक्सटेंशन लाइंस नहीं ड्रॉ की हुई, एंड दे जस्ट यूज्ड the visible lines and extension line, and the same case is here. It's basically they are using the center line as an extension line. So these are the wrong practices. These are the right practices. Basically they are using the extension lines and the dimension lines for giving the dimension, and now they are using basically a dimension line and an extension line to give the dimension instead of extending the center line. Now we have a recommended practice 5: avoid dimensioning hidden lines. Hidden lines are not meant to be dimensions. You have to make sure that you do not dimension the hidden lines. Place dimension outside the view unless placing them inside will improve clarity. You need to always try that you have to place the dimension outside the view in unless until आपकी जो dimensioning है वो अंदर करने से view के थोड़ी सी clarity में increase हो रहा हो, then you can place the dimensions inside like this, but most of the time it's recommended that you put the dimensions outside of the view. Apply the dimensions to the view that clearly represents the contour or the shape of the feature. Now this is a very important step that आपने ये कोशिश करनी होती है कि जब भी आप dimensions place कर रहे होते हो, आपने dimensions उस view में place करनी होती है जिस view में उस object की जो features हैं वो ज़्यादा clearly visible है. For example आपके पास ये 3 views आ गए, अब आपने ये distance measure किया, अब आपको ये distance नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, और ये distance पता measure कर दिया आपने, ये distance भी dimension कर दिया. अब दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, या क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है डिस्टेंस क्या है. अब इसकी बजाय अगर आप ये सारी की सारी डायमेंशन इस व्यू में दे रहे हैं तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो विजिबल लाइंस हैं, ये जो डायमेंशन हैं, ये किस पार्ट के हैं. ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डायमेंशन है, इट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस एज, इट्स डायमेंशन इज बेसिकली डिनोटिंग दिस डिस्टेंस, एंड द दिस डायमेंशन इज डिनोटिंग दिस डिस्टेंस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप डायमेंशनिंग कर रहे हो उसमें आपने जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो उस पार्ट पे डायमेंशनिंग करनी है जिसमें क्लैरिटी सबसे ज़्यादा हो. Dimension lines should be lined up and grouped together as much as possible. You have to make sure dimension lines itni bhi ho wo grouped ho to form a better healthy look of the drawing. Avoid repetition of a drawing. Repetition of dimensions should not be repeated. अगर आपने एक व्यू में कोई dimension दे दी है तो दूसरे व्यू में दोबारा वही dimension नहीं देनी. सो बेसिकली यहाँ तक आपकी जितनी भी ड्राइंग की डायमेंशन या उसके रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू initiate with the dimensions. So dimensioning process is basically from a given orthographic views of an object, repeat asking yourself the following questions in the sequence. What feature is to be dimensioned? मतलब अगर आपके पास कोई फीचर कोई प्रोजेक्शन आ गया, लाइक फ्रंट व्यू आ गया या टॉप व्यू आ गया या साइड व्यू आ गया, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा फीचर है दैट नीड्स टू बी डायमेंशन. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फीचर एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप. हाउ टू प्रेजेंट द डायमेंशन. अब आपने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया, उसकी टाइप उठा ली कि कौन सा फीचर है. फॉर एग्जांपल वो लेंथ फीचर है या रेडियस गिवन है या आर्क है या कर्व है. अब आपने देखना है कि उसमें मैंने डायमेंशन जो प्रेजेंट करनी है वो किस तरह करनी है. मैचिंग द फीचर्स इन्फॉर्मेशन टू एन अप्रोप्रिएट डायमेंशन कंपोनेंट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर लेंथ है तो आपने फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लिया कि इस लेंथ को मेजर करने के लिए, डायमेंशन करने के लिए मुझे एक एक्सटेंशन लाइन चाहिए होगी, एक डायमेंशन लाइन चाहिए होगी. लेकिन अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो आपको पता चल गया कि मुझे लीडर लाइन चाहिए होगी. सो यू विल फिगर इट आउट कि आपको ये किस तरह रिप्रेजेंट करनी है. एंड वेयर टू प्लेस द डायमेंशनिंग कंपोनेंट्स. अब आपने डायमेंशनिंग कंपोनेंट्स कहाँ प्लेस करने हैं. ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस पे प्लेस करने हैं, आपका फॉन्ट साइज क्या है, आपने किस तरह डायमेंशन लाइंस को ग्रुप करना है, और आपने लीडर के ऊपर नोट जो है उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है और कितना डिस्टेंस होना चाहिए. ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका एक जो फीचर है वो आइडेंटिफाई वो डायमेंशन हो जाएगा. देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट फीचर. इस तरह ये लूप चलता रहेगा एंड बाय द एंड ऑफ इट यू विल हैव डायमेंशन योर होल व्यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके आपको दो व्यूज गिवन है. एंड अब इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास ये आ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डायमेंशन. हाइट ऑफ द पार्ट. ठीक है, आपके पास पहला पार्ट ये आ गया कि आपने ये जो पार्ट है इसकी हाइट को डायमेंशन करना है. अब आपने किस तरह डायमेंशन करना है, आपको एक्सटेंशन लाइन्स चाहिए होंगे, आपको डायमेंशन लाइन्स चाहिए होंगे और आपको डायमेंशन नंबर चाहिए होगा. अब द नेक्स्ट लास्ट थिंग इज वेयर. अब आपने इसको कहाँ पे डायमेंशन करना है, फ्रंट राइट एज. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि आप देखें यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे भी मेंशन हो सकती है, बट दिस इज मोर ऑफ अ क्लियर व्यू. सो आपने देखा कि फ्रंट व्यू में राइट एज की तरफ मैं इसको डायमेंशन कर सकता हूँ. द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डायमेंशन इज बेसिकली द डेप्थ ऑफ द पार्ट. अब आपने डेप्थ ऑफ द पार्ट है, अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेम एज वन. आपको एक्सटेंशन लाइन चाहिए, डायमेंशन लाइन चाहिए और डायमेंशन नंबर चाहिए. और अब आप कहाँ करोगे, साइड व्यू में करोगे, टॉप एज पे. Then goes with the width of the part. Width of the part तो आपको जो चीज़ें चाहिए that is same as one.
और आप जो इसकी डायमेंशनिंग करोगे दैट विल बी ऑन द फ्रंट व्यू टॉप एज. देन यू हैव द डायमीटर ऑफ द होल. नाउ सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो अब आपके पास आ गया तो ऑब्वियसली आप इसकी डायमेंशनिंग फ्रंट व्यू में करोगे. और आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक लीडर लाइन चाहिए होगी और एक लोकल नोड चाहिए होगा. एंड देन आपको मैंने बताया था जब भी होल आता है तो आपने हमेशा उसकी डेप्थ भी बतानी होती है. और आपकी उसकी अगर वो ब्लाइंड होल है तो उसकी डेप्थ बतानी होती है. अगर वो ब्लाइंड होल नहीं है तो आप सिंपल उसका डायमीटर भी बता दे तो पढ़ने वाले को आइडिया हो जाता है दैट दिस होल इज अ थ्रू होल बिकॉज इसकी डेप्थ गिवन नहीं है. तो अब आपने जब इसकी डेप्थ उसने डेप्थ की बात की तो उसने कह रहे नॉट नेसेसरी बिकॉज दिस इज अ थ्रू होल. तो इससे पहले आपने डायमीटर ऑलरेडी बताया, बस देयर इज नो नीड टू गो फॉर द डेप्थ. Then the position of the hole. Position of the hole is इसका center बताने की. तो extension line, dimension lines and the dimension numbers are used for the locating the center of the circle and where it is placed. They are placed on the front view. So these are the basic 5 or 6 steps of how to basically dimension an object. So you have to just start with an object कि आपने कौन कौन से पार्ट डायमेंशन करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी और किस व्यू में आपने वो पार्ट डायमेंशन करने हैं. बाय द एंड ऑफ इट आप सारे जो फीचर्स होंगे उनको डायमेंशन कर चुके होंगे. These are some class exercises. अब इसमें ये सारी डायमेंशंस गिवन है. दिस इज बेसिकली अ होम असाइनमेंट. आपने क्या करना है, आपने खुद फिगर आउट करना है कि इन डायमेंशंस में से कौन सी डायमेंशंस ठीक हैं या गलत है. अब वो आप फिगर आउट कैसे करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल दीज आर द डायमेंशंस. अब आपके पास ये गिवन है और आप इस वन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि वेदर दिस डायमेंशन इज राइट और रॉन्ग. सही है, तो दिस डायमेंशन इज गुड. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा दिस डायमेंशन इज गुड एंड देन यू विल मूव टू द सेकंड डायमेंशन. और जो डायमेंशन रॉन्ग होगी उसकी रीज़न आप फिगर आउट करें कि इसकी रीजंस क्या होंगे. दिस इज वन एक्सरसाइज एंड दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज. Do these exercises to figure out to get more practice of dimensioning. So this exercises will help you understand the dimensioning aspect and help you practice how to dimension them. So this is it from my side and this is it from the dimensioning. I hope you understood it. Thank you.